So once again, Assalamu alaikum and good morning, everyone. We're meeting after I think 4 days because our last lecture was on 4th of March, and today is 8th of March. So almost 4 days are gone. So just let me recap or just let me revise the thing what we have done in the last session, and then we'll proceed for the next one. Okay. And I'll be telling you the planning for today's lecture also that what we are going to do. Okay. As we have done, I think five algorithms starting with the CFS, that is first come first serve algorithm. Second SDF algorithm. Second SDF algorithm. The third one was shortest remaining time first SRTF algorithm, which is the non-preemptive version of the SDF algorithm. After that, we saw once algorithm, the priority algorithm. Number fourth was priority algorithm. Based on the priority, the processes were executed, the processes were scheduled and executed. Okay, and the fifth algorithm was round robin algorithm. Okay, so these are total five algorithms we have seen in the last two sessions. Okay, actually, what I was planning today to go through all the question papers, what was there in the last few years. Like we can go through the question paper of 5 years, okay, and we can take because I'm doing this particular activity from last 2 or 3 years from where I'm teaching this particular subject. So I always used to take the questions from the university examination and then we solve it together because in classroom we can easily solve it. Okay, so we take the question. I just share the question to all of you. Okay, on the WhatsApp group, and they open the questions and they solve from there. Okay, if they found any difficulty, then we together we solve. Okay, so it was the activity which I conducted. Almost I spent around one or two lecture for solving these questions. Okay, so what happens actually when we solve university questions now, so हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है ठीक है कि if we will be able to solve, if we can easily solve the university questions, then in examination also we can easily solve. Okay, so that's a confidence I actually wanted in yourself. Okay, so let us start with the first paper. Because actually I don't have that pen tablet today. I'm at home today, so uh, we'll discuss first. Okay, and if it is possible, then we'll tomorrow. I'll be in college, so I'll be using the pen tablet, and then we will solve it. Okay, so the purpose of showing all the questions and all the and discussing all these questions is that okay, you also take this question and you also try to solve it. If it is possible, then I'll take the snap of. You can take the snap. You can just easily because it is very simple for you. आप इसका screenshot आराम से ले सकते हो. So you can take the screenshot and try to solve this problem. Okay? If you found any difficulty, then we will together solve it. Okay. So these are from May 18, 40, 14 से actually बहुत इसमें CBJ scheme भी है, CBCA scheme भी है. And now you people are having C scheme for 2019. Okay. So एक फिर भी go through करते हैं because 80% क्वेश्चन सेम होते हैं. ठीक है. एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आप आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में से क्वेश्चन एग्जाम में आए कि नहीं. ठीक है. ये दिस क्वेश्चन पेपर इज ऑफ 2014. ओके, सो नवंबर 2014. लेट अस सी. आ गया क्वेश्चन देखो. For 10 marks, you can easily see. Consider the following set of processes with the length of CPU burst. The CPU burst given in millisecond. Okay, it is always given in millisecond. So this is given in millisecond. The processes are assumed to have arrived in the order P1, P2, P3, P4, P5. So the order is same. Okay, all at time zero. सबके सब time zero पे है, but we are considering this order. Okay, P1, P2, P3, P4, P5. Even all the processes have arrived at 0 millisecond, but still we are considering that okay, we'll start with the P1. Draw Gantt chart. Spelling mistake है.
draw Gantt chart for the following scheduling algorithm: FCFS, SJF, non-preemptive, and then priority, and RR, that is time quantum, we have to take 1 millisecond, and also calculate turnaround time, average waiting time. So calculate, we have to calculate the turnaround time also and एवरेज वेटिंग टाइम. सी, एक 10 मार्क के लिए क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपके पास में, अगर आपको इजीली, अगर कभी सारी चीजें पता है कैसे करना है एंड हाउ टू ड्रॉ दिस गैंट चार्ट, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, आप ये क्वेश्चन को मुश्किल से 5 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादा है. यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम एचसीएफएल, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम. उसके बाद में एसजेएफ, नॉन प्रीम्प्टिव, shortest job first but non preemptive, you can't preempt the currently executing process. Okay, so non preemptive, then priority. Okay, so priority, non SJF, non preemptive, priority, the priority is also given. And उसके बाद में फिर round robin. अच्छा, while we are considering the SJF, okay, FCFS, so we don't have to consider the priority. Okay, while we are doing it using priorities, we have to consider the priority. Okay, a round robin RR, so we have to take the time quantum as 1. Okay, we have to forget about this priority and we have to solve this question. Okay, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है. तो कल टाइम इस पर रहेगा, बिकॉज मैं भी सॉल्व करूंगा तो एक्सेल शीट के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है. अगर पॉसिबल नहीं होगा ना, प्रॉब्लम हो जाता है एक्चुअली. देखते, ट्राई करते एक बार. हम आपको बोलेंगे सर खाली बोल दो, सॉल्व तो करना है. अरे जिंदा है क्या आप लोग? किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है. Yes, sir. ओके. अच्छा, how you find this particular question? Is it easy to solve or is it difficult? Earning 10 marks is very simple, I think. Okay, वापस हो जाएगा सिस्टम. So we have data. Just let me see the data. P1 10 1 2 1 5, 10 1 2 1 5, 10 1 2 1 5. Okay, so this is for P1, P2, P3, P4, P5. Okay, हम लोग तो खाली बस तीन तीन प्रोसेसेस ले रहे थे, but here we have been given 5 processes. Okay, so these are the processes. Okay, and this is the burst time, we can say BT. Okay, let us start with the Gantt chart without wasting time. तो यहाँ से हम लोग Gantt chart बनाना स्टार्ट करते हैं. Okay, तो यहाँ सबसे पहले टाइम आपका 0. ठीक है, अब यहाँ से हम लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है 0 से. According to the SCFS algorithm, first of all I'm taking FCFS. Okay, so according to FCFS algorithm, we'll start with the 0 timeline. We'll start drawing the Gantt chart. Okay, so the process will come first, will execute first. Okay, so we have process 1, that is 10. Okay, acha, the question, if you can see, the question, they have not mentioned in the FCFS, like it is a preemptive and it is a non preemptive. Okay, तो अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो क्या करना पड़ेगा? अगर मेंशन नहीं किया है तो आप मेंशन कर दो. अगर मेंशन नहीं किया है तो आप मेंशन कर दो. आप क्या मेंशन करेंगे? अच्छा, हम लोगों ने एफसीएफएस का सबसे पहला एल्गोरिथम कौन सा किया था? नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव. Non-preemptive. Good. So initially we have done the non-preemptive algorithm of FCFS. So we will take the, we'll consider if it is if it is not mentioned, then we will take it non-preemptive. Okay. तो ये आपका FCFS है जो कि non-preemptive है. So I'll mark it as a non-preemptive. Okay. Done. So we'll start with the non-preemptive of FCFS. Your P1 will come first and will execute for 10 milliseconds. Okay. So 10 हो गया आपका. चलो कंसिडर करते हैं 3 4 5, ये हो गया 10 आपका. ठीक है, एक जो आपका सेल है, आई एम कंसिडरिंग इट एज 2 यूनिट. ओके, सो 2 मिली सेकेंड आई एम कंसिडरिंग. सो लेट इट बी लाइक ये हो गया आपका P1. ओके, मैंने P1 लिख दिया. उसके बाद में इसको मैं मार्क कर देता हूँ.
After that, we have P2 because this is FCFS algorithm. So the process will come first, will execute first. Okay, your P2 will come, and P2 is only 1 millisecond. So I'm giving it as a one only. Okay, so चलो दे देते हैं P2 को. After that, we have P3. Okay, so I'm giving it to the P3. This is very simple. I'm just showing an example. Okay, तो ये ऐसा ऐसा करने में ना बहुत टाइम जाता है. Okay, तो उसको कल ही हम लोग सॉल्व करेंगे, बट अभी जितना हमसे हो सकता है उतना. अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग. Instead of solving this question, we will go through all the question which has already there in the examination. Okay, so today we'll discuss all those questions and tomorrow we'll solve those questions. Okay, is it okay? अरे ठीक है, चलो ठीक है. So it was the first question. Okay, everyone just concentrate and just look at the question for how much intensity this question has been asked. Okay, and for how many marks it has been asked. Okay, so the for earning 10 marks is very simple, and there's no chance of losing this marks. Okay, and I don't want anyone from you people कि ये मार्क्स आपके हाथ से चले जाए. मैं नहीं चाहता, बिकॉज ये बहुत सिंपल है और आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं. ओके, so earning this 10 marks 2B is very simple. Okay, so this is done. And again, if we have any other question, see, one more question for the bankers algorithm. Very simple. Okay, एक बार बता दूंगा आपको, आप लोग अच्छे से कर लें. और bankers algorithm का तो क्वेश्चन एग्जाम में रहते ही रहते हैं. आगे हमारे थर्ड चैप्टर में bankers algorithm, and we have to implement this particular algorithm in the practical also. Okay. So we are searching for the scheduling algorithm right now. If one question is already there in the paper, then the दूसरा question तो नहीं रहेगा. I'm sure about it. Okay. There's not a question for the scheduling algorithm. Only one question of 10 marks. Okay. So ये हो गया आपका first paper. Then second paper आपका December 15 का है. Let us go through. We have scheduling algorithm. Okay, we got it. This is third B. We will find third B question. Consider the following set of processes with CPU burst time. Okay. So here four processes are given and burst time are also given, and the arrival time is also the priority for all the processes. They have given arrival time. Okay. So what is the first task? Let us see. Draw Gantt chart. Actually शायद मुझे लगता है इसको ऐसे लिखते हैं GNTT, because two papers were having same spelling और हम लोग उसको GANTT लिख देते. So that may be okay. I'm not sure about it. So we have to draw Gantt chart for FCFS, that is first come first serve. Very simple for you. SJF preemptive, तो यहाँ पर SJF preemptive बोला है. ठीक है, second one. And the third one is round robin with time quantum of 3 millisecond. वहां पर पूछा था 1 millisecond, यहाँ पर बोला आपको 3 millisecond. Okay, so collectively बात ये समझ में आई कि you have to calculate or you have to draw the Gantt chart for three algorithms. For one for FCFS, second is for SJF preemptive, and the third one is for round robin with time quantum of 3 milliseconds. As you know that in round robin algorithm we give equal amount of time. We give equal amount of time to all the processes. Okay, first P1 will be given 3 milliseconds, then P2, then P4, then P3, then P4, then again P1, P2, P3, P4, then again P1, P2, P3. In this particular timeline, if some of the process has already completed its execution in the first cycle or in the second cycle, then no need to give the CPU time to that particular process. Instead of giving, you can pass it to the next process. Okay. What do you have to do? You have to calculate the average waiting time and average turnaround time, AWT and ATAT. Okay. For all the algorithms, you have to calculate. Okay, and then you need to explain which scheduling policy is adopted by the Linux. Okay, एक क्लास में एक मार्क के लिए 2 मार्क के लिए क्वेश्चन लोग रख लेते हैं. Okay, so basically हमारा जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन. अभी जो हम लोग का होता है बेसिकली सारे के सारे हमारे जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होते हैं, तो ऐसे नहीं कि खाली एक ही यूज होता है. इट्स अ कॉम्बिनेशन व्हिच इज यूज्ड इन आवर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इन अदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो, बिकॉज किसी की कुछ चीज अच्छी है, किसी की कुछ चीज अच्छी है, तो हाइब्रिड वन यूज होता है.
तो किसी का इसका इसको हम लोग को देखना पड़ेगा। तो ये एक आप लोगों का क्वेश्चन है 10 मार्क्स के लिए, जिसके अंदर आपको 3 एल्गोरिथम। एफसीएफएस तो हर जगह पर है, एसजेएफ भी हर जगह पर है। एक जगह पे राउंड रॉबिन था, वहां पर भी राउंड रॉबिन है विद चेंज ऑफ द टाइम काउंटर। ओके, सो दिस इज सेकंड पेपर एंड यू गॉट 10 मार्क्स इन योर। ओके, ये अगेन बैंकर्स एल्गोरिथम का वापस से क्वेश्चन है। सिंपल है, दिखने के लिए इतना बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है। ठीक है, सो डन विद द सेकंड पेपर, and in both the paper the scheduling algorithm question was there. Let us go to the third one. Let us see any question from scheduling algorithm. About the question, very good. Question number 4b, assume the following process arrive for execution at the time indicated and the length of CPU burst time given in the millisecond m second. Okay, so you have been given a job, you have been provided a job P1, P2, P3, P4, P5. Total 5, 8, 1, 3, 2, 6. These are the burst time which are given for all the processes respectively. Then the priority is also given and the arrival time is also given. See, the arrival time is quite complex. You can see 3, 1, 2, 3, 4. Okay. So you can see at 0 millisecond, not a single process was there at 0 millisecond when you will be considering the when you will be considering any scheduling algorithm where the arrival time matters. So at that time you need to mention, you need to think that the arrival time के अंदर आपके 0 millisecond पे not a single process has arrived at 1 millisecond, one your P2 has arrived. Okay, um, at 2 millisecond, okay, you have P3 arrived. Okay, at 3 millisecond, you have P1 and P4 arrived, and at 4 millisecond, you have P5 which has arrived. Okay, so by mentioning and by considering this one, you need to solve this question. Okay, for the above process parameters, find average waiting time and average turnaround time for the following scheduling algorithm. First come first serve हमेशा है, shortest job first हमेशा है, non preemptive priority, तो प्रायोरिटी के अंदर नॉन प्रीम्प्टिव। ओके, सो प्रायोरिटी में प्रीम्प्टिव एंड नॉन प्रीम्प्टिव दोनों होते हैं, आपको पता है। So preemptive and non-preemptive matters like in the preemptive we can easily preempt the processes, okay, but in non-preemptive we cannot preempt the currently executing process. That's a single difference between the preemptive and non-preemptive scheduling algorithm. Okay, and then we have a round robin. Assume time quantum equals to 2 units or 2 milliseconds. Okay, so how many algorithms they have given to you? First come first serve, shortest job first, non-preemptive, non-preemptive priority, and then round robin. So it's 4 algorithm they have asked. Okay, so you must have a command on all these 4. खाली एक ही बचा था, अगर वो भी डाल देता तो वो भी काम हो जाता। तो कहने का मकसद है कि देखो, तीन तो आपको पूछता ही, यहाँ पर तो भाई साहब ने 4 पूछ लिया है, बट 3 algorithm तो आते ही। So all these 5 algorithm you must be very strong in this particular topic. See, we have seen 3 papers, and in all 3 papers we have got this question. Okay, so this is the third paper. It was the third paper. Let us go to the second one. In December 2017. Okay, let us see whether we have question. Yes, we have question of 10 marks. Assume following process arrive for execution at a time indicated and length of the CPU burst time given in the millisecond. P1 to P5, their burst time, their arrival time, their priority. Priority has given, the priority has given like P5 2 4 1 3. Out of this, which process has highest priority? Which process has highest priority? Actually, I was waiting for. So what we have to do, we have to calculate the average waiting time, that is AW. You can see you have to calculate average waiting time, average turnaround time,
For FCFS, the most common, SJF, the most common one, and the round robin most common. Okay. In round robin, we have to take the time quantum as 3 millisecond, and in SJF you have to do it like non-primitive. Okay. Non-primitive कौन सा वर्जन होता है? SJF का non-primitive वर्जन क्या होता है? SJF का non-primitive वर्जन क्या होता है? भूल गया आप लोग। किसी का भी आंसर नहीं। Hello everyone, am I audible? Are you listening? हाँ तो फिर बोलो ना, आंसर करो ना। Process will be continued till execution. Yeah, it's a non-primitive, but what is the name of that particular algorithm which I told you in the last session? Non-primitive version of SJF algorithm is also called as dash 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 dash. Come on, अब ये मत बोलना कि सर भूल गए। बहुत बार रिपीट किया हम लोगों ने इसको। Anyone remember? नॉन प्रिमिटिव वर्जन है या प्रिमिटिव वर्जन है एसजेएफ का? अगेन नो आंसर। चलो कोई बात नहीं, कल देखते हैं। ओके, एंड लेट अस सी कि कौन कौन सॉल्व भी करता है उसको, सो दैट अगर आप घर पे ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए तो आपके लिए सिंपल रहेगा। okay? अच्छे से सॉल्व हो जाए। Okay, so this one question from this particular March 2018, March 2018 है नहीं, ये पेपर आपका December 2017 का है, ठीक है। So you have given 3 algorithms and you need to calculate RT। बहुत देर बाद बच्चे नहीं है, बाकी लोग तो चले भी नहीं। So we have to calculate this AWT and ATAT, that is average turnaround time for 3 algorithms mentioned: FCFS, SJF, and round robin algorithm. Okay. So let us see the next paper. तो अभी तक 4 पेपर हो गए, चारों में भाई साहब। See, I think this is the one paper in which I think scheduling algorithm का question नहीं था। नहीं, okay. So congratulations, नहीं बल्कि congratulations नहीं बोलना चाहिए, because in this particular paper शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का क्वेश्चन थर्ड भी है। नो नो दैट इज द डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ओके, मतलब ये हमारे प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, एंड दिस इज डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। वी हैव टोटल 5 एल्गोरिथम इन द डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। those are also very simple। I told you कि हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है हर चैप्टर में, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, and you know that solving numerical questions are quite easy। Okay, if you remember the things how to solve these questions, and you if you remember how to handle all the parameters, then you can easily solve these questions। Okay, so 5 question you can easily earn 50 marks। Okay, अगर आते हैं तो। So this is regarding the disk scheduling algorithm। FCFS होता है, ऑप्टिमल होता है, SSTF होता है, सी स्कैन होता है, और फिर उसके अंदर सी लुक होता है, लुक सी लुक स्कैन सी स्कैन, ऐसे इसमें 5-6 एल्गोरिथम होते हैं। ओके, वो भी बहुत सिंपल है, आप लोग देखोगे तो आप लोग भी हंसते हैं, इतना सिंपल यानी कि अर्निंग दिस 10 मार्क्स इज वेरी वेरी सिंपल। So in this particular paper, we have not found any question from the process scheduling algorithm, any numerical from the process scheduling algorithm। Okay, so फिफ्थ पेपर में नहीं था। देन May 16, इन May 16 लेट अस सी, सब May 16 में भी नहीं था क्वेश्चन। नहीं है, नहीं है। हाँ, सी
देखो क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया उसने, फाइंड AWT, ATAT, ART एंड AWTAT फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस। अभी भाई साहब, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज रिमेनिंग टाइम, अभी ये टर्म्स तो अपनों को है नहीं, लेकिन उसने लिखा है एवरेज रिमेनिंग टाइम, पता नहीं क्या है, ART एंड AWTAT, एवरेज वेटिंग, oh I don't know about this ART and AWTAT, okay, so हम लोग को देखना भी नहीं है, पहले के CBCS अपना CBGS का, for the following set of processes with CPU burst time in millisecond, assume all processes arrived at 0 millisecond. So we have P1 19, P2 7, and P3 3. Okay, so they have not mentioned the data. They have provided the data set in the theory form. Okay, they have not provided any table form. Okay, so they have not provided in the table form. Okay, so P1 is 19, P2 is 7, and P3 is 3. Okay, so we have to solve using FCFS with order P2, P3, P1. The order is mentioned over here. Okay, so if the order is mentioned like P2, then P2 will come first with 7 millisecond, it will execute. Then P3 will come, it will execute 3 millisecond, and then will go. And then P1 will come with 19 millisecond, and then it will execute. हो गया पहला वाला सवाल आपका। कैलकुलेट कर लो उसका एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड ऑल दैट। ओके, the second is round robin. Okay, the second is round robin. The order which has been given, you can see P2, P3, P1 in the first one, 4A1. Just concentrate on the 4A1. In the 4A1, this order is mentioned only for XCFS algorithm. Okay, for round robin, they have not mentioned any. They have not mentioned any order. Okay, so we have to take the time quantum as 2 milliseconds, and then we have to solve this particular problem. So we have the order like P1, P2, and P3. Okay, so P1 will come, execute 2 millisecond. Then P2 will come, execute 2 millisecond. P3 will come and will execute. Then again P1, then P2, then P3. अब ये इसमें P3 का आपका कोटा खत्म, बिकॉज 2 मिलीसेकंड इज द टाइम क्वांटम एंड इट रिक्वायर्स 2 साइकिल। ओके, सो P3 की हो गई छुट्टी। उसके बाद में थर्ड साइकिल के अंदर आपका P1, P2, अब ये हुआ वापस से P1, P2। इन फोर्थ साइकिल योर P2 will also complete its execution, okay, because it is 7, 2, 2, 2 and 1. Okay, after that, your P1 will execute all the time because there is no other process remaining for execution. So P1 is alone over here. So P1 will execute till end. Okay. So P1 will execute. Will complete its execution and then it will be. Okay. So this is the question for 10 marks they have asked in May 16. Okay. आगे और देख लेते दो पेपर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। See the question is given in the table form. Sorry. Assume the following processes arrive for execution at a time indicated and length of CPU burst time given in millisecond. So this is the burst time given, this is the priority, and this is the arrival time. See arrival time देखो उसमें कैसे दिया, थोड़ा सा जरा एक बार फोकस करो। तो P1, P2 arrived at 0 millisecond, मतलब दो प्रोसेस आपके साथ में आए, ठीक है। So if you are doing the priority algorithm, then you need to consider the priority of the process. So according to the priority of P1 and P2, so P2 will come for the execution first. Okay, and in the same way, your P3 and P4 will come at 1 millisecond, and it has a priority 0. तो जैसे ही एग्जीक्यूट होगा आपका P2 1 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो वी नीड टू फोकस ओवर हियर आल्सो, ठीक है। For the above process parameter, find average waiting time, that is AWT, average turnaround time, that is AT, average ATAT, average turnaround time for the following scheduling algorithm. FCFS the most common, shortage offers the most common, non-preemptive priority the most common, राउंड रॉबिन, टाइम क्वांटम फाइंड, सारे तो पूछ लिया उसमें, लेकिन ये 5 यूनिट के साथ में पूछे हैं, 5 मिली सेकेंड एक साथ में एग्जीक्यूट करेंगे। तो जितना ज्यादा, what is the impact of choosing the time quantum as the higher time quantum? Okay, anyone can answer? What is the impact of choosing
लार्ज टाइम क्वांटम है किसी के पास आंसर? उस दिन मैंने बताया था आप लोग को, इन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लेस वेटिंग टाइम। ओके, ये भी है एक, और उसका इम्पैक्ट होता है। उस दिन मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आप लोग। मेरे गेस्टर से तो आप लोग समझ जाना चाहिए। स्विचिंग, वेरी गुड। स्विचिंग इज लेस, ओके। ऑब्वियसली जितना मतलब के टाइम क्वांटम ज्यादा रहेगा तो उतने ज्यादा टाइम के लिए आपका वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, और जितने ज्यादा टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा तो उतना कम स्विचिंग। I think if you remember, we have seen one question in which the time quantum was 1 millisecond. Okay, if the time quantum is 1 millisecond, then you can just imagine, okay, how many time your processor has to switch between all these processes. Okay, if time quantum would be 1 millisecond for this particular problem, then for P1 it will execute 1 millisecond. Then switching to P2, P2 1 millisecond. Then switch to P3, then 1 millisecond. Then switch to P4, then 1 millisecond. Then switch to P5, then 1 millisecond. And again we'll come back to the P1, then switch 1 millisecond. Then P2, P3, P4, P5, then P1, P2, P3, P4, P5. तो ऐसा आपका चलेगा। तो सोचो कितनी बार स्विचिंग हो। Okay, so this particular parameter, that is time quantum impact, uh, is on the switching, that is on CPU switching, which is also called as context switching. इसका मैंने आप लोग को नाम बताया था, that is context switching. Okay, the context switching में ज्यादा होगा, and that number of time अगर context switching होती है तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। So we have to select or assume the time quantum, feasible time quantum we have to select. So this one question from May 17. Okay. Last paper देख लेते हैं। In the last paper है क्या हमारे पास में? नहीं, ये बैंकर्स एल्गोरिथम का है। So again, congratulations, you don't have any question in this particular paper from process scheduling algorithm. May 18 में कोई question नहीं। So if you can just summarize the thing, then out of 8 papers, मैंने खाली मई 18 तक के देखा, उसके आगे वाले नहीं देखा। उसके वाले हम लोग आगे आगे देख भी सकते हैं। कल पॉसिबल हुआ तो मैं डाउनलोड कर लूंगा, मुझे याद नहीं रहा तो आप लोग भी डाउनलोड कर लेना, तो हम लोग देख सकते हैं। मई 18 के बाद में आपका फिर आपका दिसंबर 19 आता है। नहीं, आपका दिसंबर 19 आता है। उसके बाद में फिर दिसंबर 19 के बाद में फिर आपका पास के मई 20 आएगा। ये तो मई 18 का है ना, 1 2 3 4 5, अराउंड 4 5 पेपर बाद में और रहेंगे, ठीक है। तो बहरहाल जो भी रहेंगे, तो अगर हुआ तो मैं डाउनलोड करता हूँ। और लास्ट अभी 1 साल से तो हुआ नहीं पेपर, लास्ट टाइम का पेपर भी नहीं हो पाया था, प्रमोट कर दीजिए। चलो 20 साल क्या होता है पता नहीं। तो देखते हैं, पेपर्स अगर मिलते हैं तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड आउट ऑफ दिस 8 पेपर्स, ओनली 2 पेपर्स वर नॉट हैविंग द क्वेश्चन। तो 2 पेपर्स के अंदर क्वेश्चन नहीं था, बाकी 6 में था। यू कैन जस्ट इमेजिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कितना ये पूछता है, ठीक है। तो कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, 6 आउट ऑफ 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव राइट नाउ रिसोर्सेज टू शो कैसे सॉल्व करना है, तो हम लोग कल करेंगे, बिकॉज आई विल बी इन कॉलेज टुमारो। एंड इफ इट इज पॉसिबल देन आई विल टेक वन मोर, if it is possible then I will take one more lecture tomorrow, because I will be in college, so I will take tomorrow the lecture of the day after tomorrow also. So we can easily solve all the questions easily in 2 hours, okay, and we can complete this particular topic and this particular chapter. Okay, is it feasible? ठीक रहेगा ना? Okay, so वो चल मैं कर लूँगा। फिर स्टॉप, ओके, फिर उससे फिर आप लोग को भी